जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म इसका क्या मतलब होता है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे और इसकी टाइप्स कौन कौन सी, इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। So first we have to discuss about the isomerism or the definition about this. This is what is the phenomena in which more than one compounds have the same chemical formula but different chemical structure. यानी अगर दो या दो से ज़ायद कंपाउंड्स जिनके केमिकल फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इस तरह से दो कंपाउंड्स के पास जाने को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। लेट मी एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस। Like this is one of the compound. This is what is the CH3 bonding CH2, bonding CH2, bonding CH3। ये कंपाउंड है और इसके साथ साथ ये एक और भी कंपाउंड हमारे पास मौजूद। This is what is the CH3 bonding CH, bonding CH3, and over here CH3। ये दो कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को अगर आप देखें तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स को अगर आप कैलकुलेट करें तो हम चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन मौजूद है। सो दिस इज 1 2 3 4। कार्बन्स की तादाद कितनी है? दिस इज व्हाट इज द C4। हाइड्रोजन्स की तादाद हम काउंट करते हैं। दिस इज 3 to 5 6 7 8 9 10। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन्स की तादाद है 10। okay. This is what is the C4H10. This is the molecular formula or the chemical formula of this compound. Now same is over here कि हम इसके लिए काउंट करेंगे। इसमें कार्बन्स की तादाद आप चेक कीजिएगा। दिस इज 1 2 3 4। यहाँ पे 4 कार्बन और हाइड्रोजन्स की तादाद दिस इज 3 1 and 3। कितने हो गए? 7। 7 plus 3 is 10। Now number of hydrogens also 10। So यहाँ पर आइसोमेरिज्म की क्या बात हो रही है, इसमें हमने क्या बात डिस्कस की थी कि more than one compounds, यानी दो compounds have the same chemical formula, have the same chemical formula, ये chemical formula same है इन दोनों का, but different chemical structure, इन दोनों compounds के structure एक दूसरे से different है। So this phenomena is called the isomerism। इसको ही हम isomerism कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसे हम। Next, there are different types of the isomerism। जिन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, one is the structural isomerism, number 2 is the positional isomerism, third one is the functional group isomerism, and the fourth one is the metamerism। So let's talk about the first one. This is what is the structural isomerism. Number one, first we have to take a definition of this structural isomerism. Now this word, the molecules that have the same molecular formula same होना चाहिए, but different arrangement of the atom in space are structural isomers। उन molecules को क्या कहा जाएगा? Structural isomers, और this phenomena is called structural isomerism। okay? यानी अभी जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताई for the compound having the formula, the chemical formula C4H10, ये बेसिकली वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ही एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को मजीद समझने के लिए हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से काम लेते हैं। लेट्स चेक अबाउट दिस। इफ देयर इज अ कंपाउंड CH3 bonding CH2 bonding
CH2, CH2, and this is what is the CH3. This is one of the molecule. नो सेकेंड मॉलिक्यूल बनाऊंगा यकीनन जो कि इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा. दिस इज द CH3 CH CH2 bonding CH3, and over here there is a presence of the CH3. Now the next molecule, this what is the CH3 bonding C, bonding CH3, bonding CH3 and bonding CH3. Okay, these are the three compounds. ये तीन हमारे पास कंपाउंड हमने ड्रॉ किए. नाउ लेट्स चेक द इनके केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए. नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन्स. The molecule is having carbon 5. Now let's count about the number of hydrogen in the molecule. This is 3 to 5 6 7 8 9 10 11 12. So the number of hydrogen the molecule is having is 12. Let's count about this one. This is the carbon 1 2 3 4 5. कार्बन की तादाद 5. और हाइड्रोजन अगर आप काउंट करेंगे, दिस इज 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन. एंड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इसमें भी कार्बन्स की तादाद, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. और हाइड्रोजन चारों जानिब हम देख रहे हैं कि तीन तीन हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो 3 4 12. वेल, तो ये तीन कंपाउंड्स हमने देखे कि ये मॉलिक्यूल, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, दीज आर द थ्री मॉलिक्यूल्स. इन तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. दिस इज C5H12. तो ये तीनों ही कंपाउंड, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द, well, there's the positional isomerism. First we have to discuss about the definition of the positional isomerism. This is how it is defined. The molecules having same molecular formula. यकीनन इन तमाम आइसोमेरिज्म के लिए पहली शर्त क्या होती है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए. नो अगेन द सेम कार्बन स्केलेटन, यहाँ पर स्केलेटन भी सेम होगा, जैसा कि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखा था कि उनका स्केलेटन डिफरेंट होता है. बट ओवर हियर फॉर द पोजिशनल आइसोमेरिज्म ना सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बल्कि कार्बन स्केलेटन भी सेम होगा. एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द लोकेशन ऑफ द अटैच ग्रुप. जो अटैच ग्रुप मौजूद है उसके साथ जो अटैच होगा, उसकी पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ फर्क होना चाहिए, बाकी तमाम चीजें इसमें सेम रहेंगी. तो all are called positional isomers, and again this phenomenon is called the positional isomerism. Let's now talk about the example. Let's check. This is a compound. This is what is the CH3 bonding CH2, bonding CH2, and this is what is the attachment of the OH, alcohol. ये कंपाउंड मौजूद, इस कंपाउंड में हम ये देख रहे हैं कि OH एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है. तो यकीनन जब इस कंपाउंड के हम अगर IUPAC नेमिंग लिखेंगे, तो इसके लिए रूल हमें मालूम होना चाहिए. 4 रूल्स इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो इससे पहले ना देखी हो, तो इसमें आप रूल्स को बआसानी समझ सकते हैं. सो नाउ ये हम यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन से, जो कि अटैच ग्रुप यहाँ मौजूद. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या लिखना चाहिए हमें. दिस इज व्हाट इज द 1, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, सो इसका नाम क्या होना चाहिए, प्रोपेन लिखा हमने.
और ई को हमने रिमूव करके, चूंकि OH है और OH के लिए सुफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं हम, OL. So this is what is the 1-propanol. Well, the second compound is what is the CH3 CH bonding CH3, and over here there is a presence of the OH on the hydroxyl group. now इस कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए क्योंकि OH यहाँ मौजूद है, हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट्स से कि हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, दोनों तरफ से एक ही बात है. दिस इज 2, दिस इज 3. तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ अटैच है, कार्बन नंबर 2 पर. तो इसका नाम क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट इज द 2-propanol. ओके, सो एक कंपाउंड इसका नाम क्या मौजूद है, 1-propanol, एंड सेकंड कंपाउंड इज द 2-propanol. लेट्स चेक कि अब इन दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी कैसे हो रही है इनमें. यहाँ पे चेक करते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, और एडिशनली यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ऑक्सीजन की तादाद हम यहाँ पे काउंट करेंगे. सो कार्बन्स की तादाद, दिस इज व्हाट इज 3, दिस इज 3. हाइड्रोजन्स की तादाद, दिस इज 3 to 5 6 7 और 1, दिस इज व्हाट इज द 8. C3H8 and 1 oxygen. So there is 1 oxygen. The chemical formula or the molecular formula for this compound 1-propanol is C3H8O. Now let's check about the second compound. This what is the C3 hydrogen की तादाद, this is 3 4, this is 5 and plus 3 8 and एक ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है, this is 1. So both these compounds are having same molecular formula, same skeletal structure. सेम स्केलेटन स्ट्रक्चर, स्केलेटन भी सेम है इन दोनों का, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है इन दोनों का. फंक्शनल ग्रुप भी इससे पहले कि हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. फंक्शनल ग्रुप के हवाले से इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, लिंक में आप इसे चेक भी कर सकते हैं. सो बोथ दीज आर हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप. दिस इज व्हाट इज द OH. यहाँ पर भी क्या मौजूद है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, बट फर्क क्या है, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर in location of the attached group. Okay, location of the attached group, क्या attached group की location का फर्क है. This is what is the 1-propanol is the same name and the propanol, ये दोनों नाम same है, but what is the difference, the location of the attached group. This is 1 and 2. So therefore this is the example of the positional isomerism. Next हम डिस्कस करते हैं the third one. The third one is the functional group isomerism. Functional group isomerism, how it is defined: the molecules having same molecular formula, लेकिन molecular formula same होना चाहिए हमेशा, but different functional groups or functional group isomers, उन्हें हम functional group isomers कहते हैं to each other. Okay? And this phenomenon is called the functional group isomerism. Now इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ हम चेक करेंगे. यानी हमें यहाँ पर बखूबी ये बात समझ में आती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे. So let's take the example with the alcohol molecule. This is what is the CH3 bonding CH2 2. Okay, and simple molecule में रखता हूँ. This is what is the OH, ताकि आपके लिए आसानी हो सके. This is the molecule. This is what is the presence of the alcohol. Okay. Next हम molecule लिखते हैं. This is the CH3 bonding O bonding CH3. इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर आप चेक करें तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल. एंड दिस वन
फंक्शनल ग्रुप में इससे पहले आपको तमाम डिटेल मैं समझा चुका हूँ। इसका मैंने लिंक भी इससे पहले भी शेयर किया था और इसको अभी भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, दिस इज द अल्काइल पार्ट, दिस इज द अल्काइल पार्ट, और यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, दिस इज व्हाट इज द ROR बॉन्डिंग, सो दिस इज व्हाट इज द ईथर लिंकेज और द ईथर फंक्शनल ग्रुप। सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट हम चेक करते हैं कि इन दोनों के क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें कार्बन की तादाद कितनी, 2, दिस इज द C2, हाइड्रोजन्स की तादाद दिस इज 6, and what is the oxygen, this is 1. Now let's take the ether molecule, इसे काउंट करते हैं हम, कार्बन तादाद 2, हाइड्रोजन 6 and oxygen 1. Yes, these both molecules are having the same molecular formula. check it करते हैं इसे, the molecules, इन दोनों की बात हो रही है, having same molecular formula same है, हमने चेक किया, but different functional groups, इन दोनों के पास functional group different है. So these are the functional group isomers to each other. यानी ये एक दूसरे के लिए क्या है, functional group isomers हैं एक दूसरे के, because they both the compounds are having the same molecular formula. So this is the one of the example. Now with the second example, दूसरे example की हम बात करेंगे. Second molecule we are taking is the aldehyde molecule. This is the CH3 bonding CH2 bonding C double bonding oxygen, and this is what is the H. Okay. यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या मौजूद है, दिस इज व्हाट इज द एल्डिहाइड मॉलिक्यूल. सेकेंड मॉलिक्यूल मैं बनाता हूँ, दिस इज द CH3 bonding CO bonding CH3. नो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद है. यहाँ पर ये दिस इज व्हाट इज द CHO. So CHO, this is the example of the aldehyde functional group, and this molecule is having the ketone functional group. It's having the ketone molecule. इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए हम चेक करेंगे अब कि इन दोनों के लिए क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और डिफरेंट. दिस कंपाउंड इज हैविंग 3 कार्बन्स. So this is what is the C3. Hydrogens की तादाद this is 3 to 5 and 6. C3 H6 and 1 oxygen. Let's check now the ketone molecule. This is C3. 3 कार्बन मौजूद यहाँ पर भी. हाइड्रोजन की तादाद this is 3 plus 3 is 6 and 1 oxygen. Yes, they both the molecules are having the same molecular formula but different structure. I'm sorry to say, but different functional groups. So this means कि ये molecule भी क्या है, example of the functional group isomerism. Now the third one. Third molecule हम example लेते हैं with the example of the carboxylic acid molecule. This is the CH2 no, the COOH. Well, this is the CH3 CH2 CH2 COH. The molecule, the next one, CH3 CH2 bonding COO bonding CH3. Let's say this is the molecule.
इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम चेक करते हैं कि इनमें फंक्शनल ग्रुप के हवाले से क्या मामला है. सो दिस इज व्हाट इज द COH. COH is identification of the carboxylic acid. So this is the carboxylic acid functional group. यहाँ पे चेक करें, दिस इज द COO और दोनों जानिब अल्काइल पार्ट मौजूद है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एस्टर. हाँ, इन दोनों के लिए आइसोमेरिज्म को चेक करते हैं हम कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों कंपाउंड्स के लिए सेम है. सो यस, दिस इज व्हाट इज द C1 2 3 4. कार्बन्स की तादाद 4. हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी है यहाँ पर? वी जस्ट हैव टू काउंट दिस. दिस इज व्हाट इज द CH3. यहाँ पे 3 to 5 6 7 and 8. This is the C4 H8. And oxygen की तादाद क्या मौजूद है? This is the O2. So the carboxylic acid compound is having the molecular formula C4H8O2. And for the ester, कार्बन्स की तादाद, this is 1 2 3 4. हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी होती है? 6 and plus 2. This is 8. Yes. ऑक्सीजन्स की तादाद यहाँ पर 2 मौजूद. So both these molecules are having the same molecular formula once again, the carboxylic acid and ester molecule. So these both are the functional group isomers to each other. Okay. So these are the 3 examples. याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई भी अल्कोहल मॉलिक्यूल है तो इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमेशा इथर मॉलिक्यूल ही होगा. इज द पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग है हमेशा. अगर आपके सामने कभी एग्जाम में इथर मॉलिक्यूल आ जाए तो हमेशा जान लीजिए कि उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अल्कोहल ही होगा. इन द सेम वे देयर इज अ पेयरिंग बिटवीन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन मॉलिक्यूल. एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमेशा कीटोन है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमेशा एल्डिहाइड है. एंड द सेम रिलेशनशिप बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर. सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ इस हवाले से, चेक कीजिएगा इसे. माने कि आपके पास एक मॉलिक्यूल मौजूद है. दिस इज व्हाट इज द CH3 bonding CH2. Okay, then this is what is the C double bonding O bonding CH3. This is a molecule. और आपसे कहा जाता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएं. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होगा इसका? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है. इस मॉलिक्यूल में चूंकि क्या मौजूद है? कार्बोनाइल और दोनों तरफ R मौजूद है. सो दिस इज व्हाट इज द कीटोन मॉलिक्यूल. और हमें ये बात मालूम है कि कीटोन का आइसोमर कौन सा है? दिस इज व्हाट इज द एल्डिहाइड. हमें यहाँ एल्डिहाइड बनाना होगा. So let's check over here. Aldehyde molecule. Aldehyde molecule कैसा होगा? This is the C double bonding O. This is the H. This is the basic formula of the aldehyde. अब हम यहाँ चेक करते हैं कि इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स की तादाद कितनी है. दिस इज 4. एल्डिहाइड बनाने के लिए हमने एक कार्बन का इस्तेमाल किया. अब मजीद 3 कार्बन हम अटैच करेंगे. जो हमारी मर्जी है हम किस भी पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं. दिस इज 1. This is 2 and this is what is 3. 3 हाइड्रोजन्स. नो बस हमने ये काम कर लिया. अब हमें सिर्फ हाइड्रोजन्स को यहाँ पे बैलेंस करना है. इनकी वैलेंसीज के एतबार से चेक करें. यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो रही है. सो वी हैव टू प्लेस 3 हाइड्रोजन्स ओवर हियर. नेक्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद 2 होनी चाहिए. एंड द सेम इज ओवर हियर CH2. नाउ लेट्स चेक कि इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट. अगर हमने सही बनाया है तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए. चेक करते हैं इसे. दिस इज 1 2 3 4. कार्बन की तादाद 4.
हाइड्रोजन को काउंट करते हैं हम 3 to 5 6 7 8. This is the C4H8 and single O. Next, this one, this is the 1 2 3 4 चार कार्बन. हाइड्रोजन की तादाद हम काउंट करते हैं. This is 3 to 5 6 7 and 8. Yes, this is the 8 and one oxygen. So both these molecules are having the same molecular formula once again. So these two molecules are the functional group isomers. तो इस तरीके से आप functional group isomers आसानी बना सकते हैं. Now let's check now the fourth one. The fourth example. This is what is the metamerism. Okay, सबसे पहले हम फिर जी मेटामेरिज्म की हम डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. What is the metamerism? This what is the molecules having same molecular formula. Once again, molecular formula हमेशा सेम होना चाहिए. ये बात हमें अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी है. जब भी हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, molecular formula हमेशा सेम होना चाहिए. But unequal distribution of alkyl part on both sides of non-carbon atom within molecule are called metamerism. Okay. Or called metamers to each other, and this phenomenon is called the metamerism. ये बात को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल से काम लेना पड़ेगा यकीनी तौर पर. चेक करते हैं इसे हम. This is what is the CH3 bonding CH2 oxygen bonding CH2 and the CH3. Well, एक और मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं. So the CH3 bonding CH2 bonding CH2 bonding O and bonding CH3. ये दो कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं. ये दो कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं. इन दोनों कंपाउंड्स पे हम चेक करते हैं यहाँ पर मामला क्या हो रहा है. यहाँ चेक कीजिएगा. इस मॉलिक्यूल के सीक्वेंस में कार्बन मौजूद नहीं है. बीच में एक इंटरप्शन मौजूद है. दिस इज व्हाट इज द नॉन कार्बन एटम. सम ऑफ द टाइम्स इट मे बी नाइट्रोजन. यहाँ पर सल्फर भी हो सकता है बाद औकात. बट चूंकि हमें अपनी स्टडी रिस्ट्रिक्ट रखनी है जब अपने कोर्स के एतबार से. सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ईथर मॉलिक्यूल. तो ये ईथर मॉलिक्यूल है. तो हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन में कंटिन्यूएशन नहीं है. बीच में ऑक्सीजन आ गया. दिस इज व्हाट इज द नॉन कार्बन एटम. दिस इज व्हाट इज द नॉन कार्बन एटम. जहां पर इसकी यह बात हो रही है. दिस इज व्हाट इज द नॉन कार्बन एटम. Then the unequal distribution of alkyl part on both sides. Both sides से मुराद यानी नॉन कार्बन एटम के both side. This is the side, left side and the right side. Okay. यहाँ चेक कीजिए. इस मॉलिक्यूल में इसके लेफ्ट साइड पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं. दिस इज 1 and 2. कितने हैं? 2. ना इसके राइट साइड पर कितने हैं. नॉन कार्बन एटम के राइट साइड पर कितने कार्बन्स हैं. 2. So over here the distribution of the alkyl part on both sides of non-carbon atom is 2:2. Okay. Now over here, this is what is the non-carbon atom. Non-carbon atom के left side पर कितने कार्बन्स मौजूद हैं. 3. नॉन कार्बन एटम के राइट साइड पे कितने कार्बन्स मौजूद हैं. दिस इज 1. सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है. 2:2.
2:2। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है? 3:1। दिस इज डिफरेंट, दिस इज अनइक्वल। सो यहाँ पे ये बात की जा रही है, बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। यहाँ 2:2 की है या 3:1 की है, डिफरेंट है। Of alkyl part on both sides of non-carbon atom within molecule. Okay, molecule के अंदर यहाँ पर different arrangement हो रही है, so or called metamers. So ये these both are the metamers to each other. Okay, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? Metamers हो गए. These are the metamers. Now once again यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दिस इज कार्बन 1 2 3 4। कार्बन्स की तादाद कितनी है? दिस इज 4। हाइड्रोजन, दिस इज 3 to 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन की तादाद कितनी? 10। और 1 ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल इज हैविंग C4H10O। यहाँ चेक करते हैं कार्बन की तादाद, दिस इज 1 2 3 4। हाइड्रोजन की तादाद कितनी होती है? दिस इज 3 to 5 6 7 8 9 10। 10 hydrogen and 1 oxygen is present in the compound. So both these compounds are having the same molecular formula, that is what is the C4H10O. So that means these both compounds are the metamers to each other. So this was the example related to the ether molecule. Now next we have to check with the example of the ester molecule. First molecule is CH3 bonding C, double bonding oxygen, with oxygen, then CH2, and this one is the CH3. So this is one of the ester molecule. The next molecule for the metamers is CH3, CH2, with the carbonyl, oxygen, and this is what is the CH3. So these two are the molecules. इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हम चेक करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स किस तरीके से होंगे। Now let's check this कि इस कंपाउंड में कार्बन की चेन के बीच में ये डिसकंटिन्यूएशन आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, और दैट इज व्हाट इज द नॉन कार्बन एटम। नॉन कार्बन एटम के दोनों तरफ हम चेक करते हैं कितने कार्बन्स मौजूद है। इसके लेफ्ट साइड पर हम चेक करते हैं, दिस इज 1 दिस इज 2। तो इसके लेफ्ट साइड पर कितने कार्बन्स मौजूद हैं? 2। इन द सेम वे इस ऑक्सीजन के राइट साइड पे कितने कार्बन्स मौजूद हैं? 1 सेकेंड 2। तो यहाँ पर 2:2 का रिलेशन मौजूद है। तो इस कंपाउंड में चेक करते हैं, दिस इज व्हाट इज द नॉन कार्बन एटम। इसके लेफ्ट साइड पर कार्बन्स की तादाद कितनी है? 1 2 and 3। So there are three number of carbons, और इसके राइट साइड पर कितने कार्बन्स मौजूद? दिस इज ओनली 1। So this is what is the different ratio कि यहाँ पर 2:2 की डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर 3:1 की डिस्ट्रीब्यूशन है। So इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंपाउंड, और हमें ये बात भी साथ में मालूम है कि यकीन इन दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। बट दीज बोथ कंपाउंड इन केस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दीज बोथ आर द मेटामर्स टू ईच अदर। ना इनके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हम चेक कर लेते हैं। लेट्स काउंट दिस। नंबर ऑफ कार्बन्स की तादाद कितनी होती है? 4। So this is what is the C4. हाइड्रोजन की तादाद, दिस इज 3 to 5 6 7 8। हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर भी 8 मौजूद, और ऑक्सीजन की तादाद 2 मौजूद है। What is the 2? Now let's check about this molecule. This what is the C1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन की तादाद 3 to 5 6 7 8।
once again the 8 oxygen or 8 hydrogen और 2 ऑक्सीजन इसके साथ मौजूद है. So both these compounds are having the same molecular formula, okay, but इसकी distribution नॉन कार्बन आइटम के दोनों अतराफ इन दोनों मॉलिक्यूल्स में चेंज है. इस बुनियाद पर ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मेटाबॉल्स होते हैं. सो मेटामर्स के हवाले से और द मेटामेरिज्म के हवाले से मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी. एक इथर मॉलिक्यूल की एग्जांपल थी और एक एस्ट्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म.